So good morning, everyone. My name is Saransh and I am a faculty and I am a lecturer in Suresh Gyanvihar University. And today we will discuss about the heat and mass transfer. Good morning, everyone. My name is Saransh and I am a faculty in Suresh Gyanvihar University. And today we will discuss about the basic introductions of heat and mass transfer. Here we discuss about some topics like learning outcomes, learning objectives of heat and mass transfer, learning outcomes of heat and mass transfer, course content of heat and mass transfer, definitions of heat transfer, form of heat transfer, diagrams, definitions of mass transfer, and MCQ. MCQ means multiple choice questions. Learning objectives. This course is designed to introduce a basic study of the phenomena of heat and mass transfer, to develop methodologies for solving a wide variety of practical engineering problems, and to provide useful information concerning the performance and design of particular system and process. देखो कि जो भी टॉपिक अगर अपन डिस्कस करते हैं या जो भी कुछ अगर अपन करते हैं उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये मालूम होना चाहिए कि एक कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक हम क्यों कर रहे हैं, उसका क्या मोटिव है एंड क्या उसके क्या सिम्टम्स होंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक जो है कि इसके अंदर अपन की हीट एंड मास ट्रांसफर की बेसिक स्टडी या बेसिक फिनोमेना के बारे में बात करेंगे कि जिसके अंदर मतलब कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी हमारी जो प्रॉब्लम्स जो होती है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, मतलब कि ऑल ओवर टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो उनके अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि हमारा है हीट एंड मास ट्रांसफर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स कि हम इसकी जो लर्निंग जो कर रहे हैं कि हमको कोई ये मालूम होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर चीज़। जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको इस चीज़ का मालूम होना चाहिए कि वो हम टॉपिक क्यों कर रहे हैं एंड इसका हमारे लिए क्या यूज़ है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि कंसर्निंग द परफॉर्मेंस एंड डिजाइन ऑफ पर्टिकुलर सिस्टम्स। Second, अपना a knowledge-based design problem requiring the formulations of solid conductions and fluid convection and the technique of numerical computation progressively elucidated in different chapters will be assigned and studied in detail, as well to gain experience in designing experiments for thermal systems. The design, fabrication, experimentations of a thin film heat flux gauge will be attempted as a part of the laboratory requirements। ठीक है, मीन्स कि सर की मतलब कि इसके अंदर हम बेसिक टाइप्स ऑफ नॉलेज को हम गेन करेंगे, लाइक कि कोई भी अगर सॉलिड कंडक्शन एंड फ्लूइड कन्वेक्शन, सॉलिड कंडक्शन क्या होता है और फ्लूइड कन्वेक्शन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन हम आगे करेंगे कि सॉलिड कंडक्शन का फॉर्मुलेशन क्या होगा या फ्लूइड कन्वेक्शन का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, या कोई भी एक जो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन जो होता है उसके लिए विच टाइप्स ऑफ टेक्निक्स आप यूज में ले रहे हो, या डिफरेंट चैप्टर्स जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिजाइन करते हैं और जो भी असाइनमेंट इसके बारे में दिए जाता है उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इसकी स्टडी करते हैं। As well to gain experience in designing experiments for thermal systems, design, fabrications, and experiments of a thin film heat flux gauge will be attempted as a part of the laboratory requirements। मतलब कि किसी भी लेबोरेटरी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर डिज़ाइन या फैब्रिकेशन या एक्सपेरिमेंट या किसी भी एक्सपेरिमेंटेशंस के बारे में, तो उसकी भी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। हम यहाँ पर उस चीज़ का एक्सपीरियंस लेते हैं। हीट एंड मास ट्रांसफर, लर्निंग आउटकम्स के अंदर की मतलब कि हम यहाँ पर किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द बेसिक लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब कि किसी भी सर आप अगर हीट ट्रांसफर के बारे में बात करें तो कोई भी जब एक टॉपिक के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं या कोई भी जब एक पर्टिकुलर कंटेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं या कोई भी काम जब हम लोग करते हैं तो उसके बेसिक लॉस हमारे जरूरी होता है कि फॉर इसकी एप्लीकेशंस या जब आप इसको यूज़ में लोगे तो जब तक आपको इसके बेसिक लॉस पता नहीं होंगे तब तक हम इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अंडरस्टैंड द बेसिक लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर। सेकंड अपना आ जाता है अकाउंट फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इन थर्मल एनालिसिस ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। थर्ड अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनालाइज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इन सिंपल ज्योमेट्रीज। एंड फोर्थ इज डेवलप सॉल्यूशन फॉर द ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इन सिंपल ज्योमेट्रीज। And I repeat, understand the basic laws of heat transfer. Second, account for the consequence of heat transfer in thermal analysis of engineering system. किसी भी इंजीनियरिंग सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर थर्मल एनालिसिस मीन्स थर्मल इंजीनियरिंग मीन्स थर्मल एनर्जी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो किसी भी हीट ट्रांसफर के कॉन्सिक्वेंस को अकाउंट करता है। थर्ड अपना आ जाएगा यहाँ पर एनालाइज प्रॉब्लम्स involving steady state heat conduction in simple geometries. Here we discuss about two types of uh, heat conduction. First of all is steady state heat conduction, and second is moving state heat conduction. But here we discuss about steady state heat conduction. And fourth is developed solution for transient heat conduction in simple geometries. किसी भी सिंपल ज्योमेट्रीज के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं यहाँ पर हीट एंड मास ट्रांसफर करते हैं। सो ये हमारे 4 पॉइंट हो जाएंगे। Basic laws of heat transfer, account for the engineering systems, analyze problems in simple geometries for steady heat conduction, and moving and dynamic steady heat conduction, which is also called moving state heat conduction. And steady state heat conduction is also called stationary state heat conduction. And fourth is developed solution for transient heat conduction in simple geometries. And fifth is obtain numerical solution for conduction and radiation heat transfer problem. Here, all the heat and mass transfer are divided into three parts. First is conduction, second is convection, and third is radiation. Uh, and here we discuss about problems which is solved by the numericals, and these problems are created by conduction, convection, and radiation, and it is solved by also understand the fundamental of convective heat transfer process. And seventh is evaluate heat transfer coefficient for natural convection. So I repeat again, 7 types of learning outcomes. First of all, understand the basic laws of heat transfer. Second is account for the consequence of heat transfer in thermal analysis of engineering systems. Third is analyze problems involving steady state heat conduction in simple geometries. And fourth is develop solution for transient heat conduction in simple geometries. Fifth is obtain numerical solution for conduction and radiation heat transfer problems. Sixth is understand the fundamental of convective heat transfer process. And seventh is evaluate heat transfer coefficient for natural convection. And the eighth is evaluate heat transfer coefficient for forced convection inside ducts. Ninth is evaluate heat transfer coefficient for forced convection over exterior surface. And tenth is analyze heat transfer performance by using the method for log mean temperature difference. And the 11th is analyze heat exchanger performance by using the method of heat exchanger effectiveness. The 12th is calculate radiation heat transfer between black body surfaces, and the 13th is calculate radiation heat exchange between gray body surfaces. Learning outcomes. आई रिपीट अगेन, अंडरस्टैंड द बेसिक लॉस ऑफ हीट ट्रांसफर, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड अपना आएगा अकाउंट फॉर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हीट ट्रांसफर इन थर्मल एनालिसिस फॉर इंजीनियरिंग सिस्टम्स। थर्ड इसके बारे में फिर अपन बात करते हैं एनालाइज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन इन सिंपल ज्योमेट्रीज। एंड फोर्थ हमारे यहाँ पर आ जाता है डेवलप सॉल्यूशन फॉर ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन इन सिंपल ज्योमेट्रीज। मतलब कि हीट एंड मास ट्रांसफर के अंदर हमारी किस तरीके मतलब कि विच टाइप्स ऑफ मतलब कि किस टाइप्स की प्रॉब्लम हम यहाँ पर फेस करते हैं और उसका सॉल्यूशन हमको किस तरीके से हम ऑप्टेन करते हैं और उसको फिर हम आगे किस तरीके से अप्लाई करते हैं या किस तरीके से हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसके बारे में हम यहाँ पर इन 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर 3 पॉइंट आते हैं, पॉइंट फिफ्थ, 6 एंड 7। पॉइंट फिफ्थ के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि ऑप्टेन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फॉर कंडक्शन एंड रेडिएशन हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम्स। सेकंड इज अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस। एंड सेवंथ इज इवैल्यूएट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नेचुरल कन्वेक्शन।
इसके अंदर मतलब कि कंडक्शन के थ्रू मतलब कि कंडक्शन के अंदर कौन सा विच टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल मतलब कि किस टाइप्स की प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी और उसका किस तरीके से सॉल्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इसी तरीके से कॉन्वेक्टिव के अंदर किस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस चीज़ का हम डिस्कशन करते हैं। और उसके बाद में कि रेडिएशन के अंदर किस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं और उसका किस टाइप का सॉल्यूशन होगा इसकी स्टडी हम इसके अंदर करते हैं। एंड उसके बाद में हम आ जाते हैं अंडरस्टैंड द फंडामेंटल ऑफ कॉन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर प्रोसेस। मतलब कि हीट ट्रांसफर प्रोसेस का जो कॉन्वेक्टिव प्रोसेस जो होगा उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड उसके बाद में अपन बात करते हैं इवेल्युएट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नेचुरल कन्वेक्शन। हियर convections are classified into two types: natural convection and forced convection. The eighth point is evaluate heat transfer coefficient for forced convection inside ducts. The inside ducts के अंदर लगने वाली forced convection और उसका लिए जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को जब यूजफुल होगे उसको आप किस तरीके से इवेल्युएट करते हैं इस चीज का डिस्कशन हम हीट एंड मास ट्रांसफर के अंदर करते हैं। एंड इसके अलावा इवेल्युएट हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर फोर्स कन्वेक्शन ऑफ ओवर एक्सटीरियर surfaces. Force convection for a heat transfer coefficients are classified into two parts. First is heat transfer coefficient for convection for a inside ducts, and second is heat transfer coefficient for forced convection over exterior surfaces. And the tenth is analyze heat exchanger performance by using the method of log mean temperature difference. Log mean temperature difference is the important role play in the heat and mass transfer. Here we discuss about various types of numerical problems like heat exchanger performance, heat transfer coefficient, heat natural convection, forced convection, natural conduction, and various types of radiations problems, which is related by the numerical problems and its solution, which is solved by the log mean temperature difference. Here we discuss about temperature difference between a system from inlet and outlet, and the and next is analyze heat exchanger performance by using the method of heat exchanger effectiveness. And the 12th is calculate radiation heat transfer between black body surfaces. And third is calculate radiation heat exchange between the gray body surfaces. Here we discuss about three types of body surfaces. First of all, black body surfaces. Second is gray body surfaces, and the third is white body surfaces. First of all, we discuss about black body surfaces. Black body surfaces are the body which is absorb the all types of light emission. But here, white body surfaces are contain uh, but white body surfaces are not contain any types of and are not absorb any types of uh, radiation. But the gray body surfaces are contain some amount of radiations, but not 100%. But output in a but 100% given output in a black body surfaces. And analyze heat exchanger performance. Here we discuss about heat exchanger effectiveness method. इस मेथड के थ्रू आप किसी भी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस या उसमें या उससे होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड उसके बारे में अपने यहाँ पर and now we discuss about course content. Course content divided into five parts: Module 1, Module 2, Module 3, Module 4, and Module 5. First of all, here we discuss about Module 1. Yes, sir, and in the Module 1, heat transfer process. Module 1 or con- uh, sir, in the Module 1, here we discuss about heat transfer process, conduction, and radiation. And now discuss about thermal conductivity, thermal conductivity for solids, thermal conductivity for a liquid, and thermal conductivity of a gases. And now we discuss about effect of temperature on thermal conductivity. And second is module second, which is module second, which is described by the conduction. Here we discuss about Fourier's law. Second is heat transfer by conduction through a plane and composite wall. Third is radial heat transfer by conduction through a cylinder and sphere. Fourth is overall heat transfer coefficient. Next is critical insulation and heat transfer through fins, numerical problems. First of all, we discuss about Fourier's law.
Second is heat transfer by conduction through a plane and composite wall. Third is radial heat transfer by conduction through cylinder and sphere. Fifth is overall heat transfer coefficient. Sixth, critical insulations. Seventh is heat transfer through fins, and next is nu- numerical problems, which is discussed in a next slide, a next video. And the module third is convection. Convections are classified into two parts. Here we discuss in the previous slide, like natural convection and forced convection. And here we discuss about direct contact type, regenerator and storage type, heat transfer with module third are convert module third are converted into two parts: convection and heat transfer with change of phase. First of all, we discuss about convection. Convections are classified into two types: natural convection and forced convection. And now it is described by the direct contact type and regenerator and storage type. And second, and the next is heat transfer with change of phase. Here we discuss about nature of vaporizations phenomena and different regimes of boiling, heat transfer. And next is condensation of flat bed, and next is drop wise condensation. Module 4. Module 4, we will discuss about heat exchanger, and it is described by the heat exchanger. In the heat exchanger, we'll discuss about the types of heat exchanger, arithmetic and logarithmic mean temperature differences, heat transfer coefficient for parallel, counter and cross flow or type heat exchanger. Next is effectiveness of heat exchanger. Next is constructional and manufacturing aspects of heat exchanger. Last but not the least is radiation. Here we discuss about absorption, reflection, and transmission. Next is radiant energy distribution curve. Next is emission power, and next is black body and white body. We just discussed about the previous slide. And next is gray body. Next Kirchhoff's law. Next Wien's displacement law. Next is Planck law and Stephen Boltzmann law. Next is radiosity, and next is shape factor. Uh, Now we will discuss about the definitions of heat transfer. Definitions of heat transfer. Heat transfer is heat transfer is a discipline of thermal engineering that concerns the generation, use, conversion, and exchange of thermal energy between physical systems. Heat transfer is classified into various mechanisms like heat conduction, heat convection, heat radiation, and transfer of energy via the phase changes. We will discuss about in a previous slide. हीट ट्रांसफर इज अ डिसिप्लिन ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग मतलब कि हीट ट्रांसफर को सिंपली भाषा में सिंपली लैंग्वेज के अंदर अगर हम बात करें तो इस मतलब कि ये थर्मल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है या ये हम ये बोले कि इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है कि मतलब कि जिसके अंदर अपन थर्मल एनर्जी या जिसको अपन हीट एनर्जी मतलब किसी भी सिस्टम मतलब कि दो फिजिकल सिस्टम्स लाइक अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर दो फिजिकल सिस्टम्स के बारे में बात करता हूँ सिस्टम वन एंड सिस्टम टू और इनके बीच में और इनके बीच में चेंज होने वाली मेरी हीट एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मल एनर्जी वो किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है उसका यूज क्या है उसका कन्वर्जन क्या है उसका जनरेशन क्या है उसकी डिस्कशन हम यहाँ पर हीट ट्रांसफर के अंदर करते हैं मीन्स हीट ट्रांसफर between two systems from one point to another point. Heat is transferred from one point to another point in a one system, and heat is transferred between one system to another system, and heat is transferred from in a single system from one point to another point in a various types of mechanism like conduction, convection, radiation, thermal conduction, thermal convection, thermal radiations, and transfer of energy by the phase changes. Phase changes mean solid to liquid and liquid to gases and gases to liquid and liquid to solid. These types of uh, changes are called phase changes. Here we discuss about all types of heat transfer are divided into discussed in a previous slide: conduction, convection, and radiation. First of all, we will discuss about heat conduction. Heat conduction, also called diffusion, in the direct microscopic exchange of kinetic energy of particles through the boundary between the two systems. When an object is at a different temperature from the another body or its surroundings, heat flows so that the body and the surroundings reach the
same temperature, at which point they are in the thermal equilibrium. Heat conduction are also called diffusion is the direct microscopic exchange of kinetic energy of particles through the boundary between the two systems. मतलब किसी भी सिस्टम मतलब कि अपन जितनी भी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अगर अपन एनर्जी के बारे में बात करें कि अगर कोई हमसे ये पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी तो एनर्जी के बारे में हम एक सिंपल सी चीज जानते हैं कि सर एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी destroyed but it's changed into one form to another form like mechanical energy to electrical energy to chemical energy, and vice versa is chemical energy to electrical energy and electrical energy to mechanical energy. तो ठीक है लेकिन बेसिकली अगर अपन बात करें तो दो टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी when an object is in different temperature from another body's surroundings heat flows so that the body and the surroundings reach the same temperature at which the point they are in the thermal equilibrium. अगर मैं बात करूँ कि हीट कंडक्शन क्या होता है तो हीट कंडक्शन के बारे में अपन ने एक चीज़ जानी है कि सर हीट कंडक्शन के बारे में आप ये चीज़ कि सर हीट कंडक्शन के बारे में हम ये बात बोल रहे हैं कि ये हमारे हीट ट्रांसफर का ही एक पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर हम बात करें कि हीट कंडक्शन क्या है तो हीट कंडक्शन के बारे में पहली चीज़ चाहे हम हीट कंडक्शन के बारे में बात करें चाहे हम हीट कॉन्वेक्शन के बारे में बात करें या चाहे हम हीट रेडिएशन के बारे में बात करें तो पहली चीज़ हम ये बोलेंगे सर इनके अंदर क्या होगा कि हीट कंडक्शन हीट कॉन्वेक्शन एंड हीट रेडिएशन के अंदर कि ये हमारी हीट ट्रांसफर की एक पार्ट है कि जिसके अंदर मतलब कि हीट हमारी ट्रांसफर होगी ठीक है लेकिन इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या होगा कि मतलब कि किसी भी सिस्टम के अंदर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट पे जो एक हीट एक्सचेंज हो रही है उसको अपन बोलेंगे हीट कंडक्शन लाइक सपोज करो कि ये एक कि इसको इसको मैं एज अ रोड में इसको मैं एज अ रोड कंसिडर कर रहा हूँ और इसको जब मैं एज अ रॉड कंसिडर करूंगा जो कि मेरी 20 mm 50 mm 100 mm 150 mm 200 mm कितनी की भी हो सकती है और इसके एक पॉइंट पे मैंने हीट देना स्टार्ट करी मतलब जब तक मैंने इसको हीट नहीं दी थी तब तक मुझे इस पूरी एक बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पता है लाइक वो मेरा टेम्परेचर होगा मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे पता है कि जब तक मैंने इस सिस्टम को कि ये इस पैन को मैं एज अ रॉड कंसिडर कर रहा हूँ और ये रॉड मेरी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को जब तक मैंने हीट नहीं दी तब तक इसका जो टेम्परेचर जो था वो मेरा 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा लेकिन अब मैं क्या करूँगा मैं इसको हीट दूंगा मीन्स मैं इसको थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा इसके एक पॉइंट वो पॉइंट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने इस पॉइंट कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर मतलब कि मैंने हीट देनी स्टार्ट करी तो वो क्या करेगा मतलब कि इस पॉइंट से कि जैसे जब मैं हीट दूंगा तो हीट मैं इस वाले पॉइंट पे दे रहा हूँ लेकिन ये हीट ट्रांसफर होते 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 मेरी ये जो लास्ट पॉइंट जो है मेरे ये इस वाले पॉइंट तक आ जाएगी तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेरी हीट हीट जो है ट्रांसफर हो रही है एंड दिस टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कॉल्ड हीट कंडक्शन इन अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट and also called and I repeat my statement is what is the heat conduction uh, then I say heat conduction is a part of heat transfer in which and in a system heat is transferred from one point to another point in a system. These types of heat transfer are called heat conduction. देन क्या होगा कि मतलब कि अगर कि जैसे अगर मैं जब मैं टेम्परेचर दूंगा तो होगा कि अगर मैं इसको कितने भी डिग्री का टेम्परेचर अगर मैं दे रहा हूँ कि जब मेरे 50 डिग्री सेंटीग्रेड थी और जब मैंने इसको टेम्परेचर दिया तो इसका क्या होगा कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वो मेरा 50 डिग्री से मेरा 150 डिग्री 200 या 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा और जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो अगर सपोज करो कि अगर मैं उसको यहाँ तक 250 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 250 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में कुछ मेरी हीट लॉस हो जाएगा तो यहाँ पर जो मुझे टेम्परेचर मिलेगा वो मुझे 150 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड ही टेम्परेचर मिलेगा. Such spontaneous heat transfer always occurs from a region of high temperature to another region of lower temperature, as described in the second law of thermodynamics. यहाँ पर की देखो अपन जैसा कि अपन डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये एक मेरी रॉड है और मतलब कि और इसके एक पॉइंट को जब हम गर्म करेंगे मीन्स हीट देंगे मीन्स थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इसकी हीट मतलब ये हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर ये हमारा हाथ है वहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगी एंड दिस टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कॉल्ड heat conduction which is a part of heat transfer. The next is heat convection. Heat convections occurs when bulk flow of fluid, gas, or liquid uh, carries heat along with the flow of matter in the fluid. The flow of fluid may be forced by external process or sometimes in the gravitational fields by buoyancy forces caused when the thermal energy expands the fluid मतलब किसी भी फ्लूइड की जब थर्मल एनर्जी एक्सपांड हो जाएगी फैल जाएगी
उस दौरान जो हमारी किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर जो हो रही है, दिस टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर आर कॉल्ड हीट कन्वेक्शंस, thus influencing in the on transfer. The latter process is often called natural convection. All convective processes also move heat partly by the diffusion as well. Another form of convection is forced convection. In the case of the fluid is forced to the flow by use of a pump, fan, or other mechanical means. डायग्राम वार्म मॉलिक्यूलर एंड कूल मॉलिक्यूलर्स, मतलब कि एक ये हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर फ्लूइड है। फ्लूइड मींस लिक्विड है। मतलब कि इसके अंदर मतलब कि जो हमारे कूल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब कि उनका टेम्परेचर लाइक मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये मेरे कूल मॉलिक्यूल्स मेरे वार्म मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मेरा टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से पहुंचकर 500 500 हजार या 1500 तक पहुंच जाएगा। And these types of heat transfer are called heat convection, which is a part of heat transfer. And next is thermal radiations. Thermal radiations occurs through a vacuum or any transparent medium like solid, liquid, and gas. Liquid are also called fluid. It is the transfer of energy by means of a photons in the electromagnetic waves governed by the same laws. ठीक है। थर्मल एनर्जी थर्मल रेडिएशंस अपना वैक्यूम पार्ट के अंदर क्रिएट होगा। इसके अंदर अपन सॉलिड मीडियम भी कंसिडर करेंगे, फ्लूइड मीडियम भी कंसिडर करेंगे, जिसको अपन लिक्विड मीडियम बोलेंगे, और अपन गैस मीडियम भी कंसिडर करेंगे। इसके अंदर मतलब कि जो अपने ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होगा वो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जो फोटॉन्स जो होंगे उनके थ्रू चेंज होगा, like this. Definitions of mass transfer. Uh, all all the subjects heat and mass transfer are divided into two groups. First of all is heat transfer, and second is mass transfer. We will discuss about uh, heat transfer, but now we will discuss about the mass transfer. Mass transfer describes the transport of mass from one point to another, and is one of the main pillars in the subject of transport phenomena. Mass transfer may take place in the single phase or over phase boundaries in multi-phase system. In the vast majority of engineering problems, mass transfer involves at least one fluid phase, gas or liquid, although it may also be described in solid phase materials. And in many cases, the mass transfer of species takes place together with chemical reactions. This implies that flux of a chemical species does not have to be conserved in a volume element, since chemical species may be produced or consumed in such an element. The chemical reactions are sources or sinks in such flux balances. Diagram. What is mass transfer? Modes of mass transfer, like lump of sugar, sugar molecule, low ion concentration, and high ion concentrations. When low ion concentrations are converted into high ion concentrations, and vice versa, is high ion concentrations are converted into low ion concentrations. These types of transfer are called mass transfer. Some MCQs. Multiple choice questions. All radiations in a black body are: first is reflected, second is refracted, third is transmitted, and fourth is absorbed. The right answer is option D, absorbed. Second is the heat is transferred by conduction, convection, and radiation. First is melting of ice. Second is boiler furnaces. Third is condensations of steam in condenser, and the last is none of these. यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि मतलब कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के द्वारा जो भी आपकी हीट ट्रांसफर जो हो रही है वो किस गैस के अंदर होगी, मतलब कि melting कंडीशन के अंदर होगी, boiler कंडीशन के अंदर होगी, जो या इसमें या इनमें नहीं। तो ये चीज जानता है कि इसके सर हीट मीन थर्मल एनर्जी, और थर्मल एनर्जी मतलब कि और थर्मल एनर्जी कब मिलेगी, मतलब कि जब अपन किसी चीज को गर्म करेंगे, किसी चीज को गर्म उस करेंगे जैसे फर्नेस। तो यहाँ पर मतलब कि जहाँ पर हमारा बॉयलर होगा वहाँ पर हमारी हीट ट्रांसफर होगी, और हीट ट्रांसफर किन फॉर्म में होगी? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। now now हमारे फॉर्म पे कंडेंसेशन
लिक्विड के अंदर convert होती है, means हम उसको ठंडा कर रहे हैं और हीट जो कि हमारा हीट का ऑपोजिट है, इसलिए कंडेंसेशन ऑफ स्टीम कंडेंसर वो हमारा यूज होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बॉयलर फर्नेस। So, and I re- and I repeat my questions. The heat is transferred by conduction, convection, and radiations. In the right answer is boiler furnaces. मतलब कि ये जो प्रोसेस पूरी प्रक्रिया हीट एंड हीट ट्रांसफर की कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन की हमारी कब होगी कि सर जब हमको आउटपुट के तौर पर बॉयलर फर्नेस मिलेगा। The next question is heat is transferred by all three modes of transfer: conduction, convection, and radiation. Right answer is electric heater. The second is steam condenser. Third is boiler, and fourth is refrigerator condenser coils. जैसा कि हमने जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया है कि सर यहाँ पर मतलब कि अपन किसी इलेक्ट्रिकल हीटर के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम किसी कंडेंसर के बारे में बात नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम इसके रेफ्रिजरेटर के बारे में बात नहीं करेंगे, जो कि हमारा कोल्ड पॉइंट टू जो कि हमारा कोल्ड टू हॉट की तरफ कन्वर्ट होता है। इस हीट ट्रांसफर के अंदर हीट जो हमारी ये हमारा हॉट टू कोल्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, जबकि बॉयलर हमारा हॉट टू कोल्ड के अंदर कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफर का, जिसके हमारे मोड होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। So the right answer for heat is transferred by all three modes of transfer: conduction, convection, and radiation. Is option The right answer is option B. Is the right sorry The right answer is option C, boiler. Fourth question is the radiations emitted by a black body is known as the black radiations, full radiations, total radiations, and all of these. मतलब कि जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे रेडिएशंस जो होंगे वो हमारे थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी के थ्रू होंगे: ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी एंड ग्रे बॉडी। सो यहाँ पर जो हमारे की जो लाइट रेडिएशन जो हमारी एमिटेड हो रही है वो ब्लैक रेडिएशन, फुल रेडिएशन एंड टोटल रेडिएशन। ब्लैक रेडिएशंस के अंदर हमने ये बात करा था कि फुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको एमिट कर लेती है, इसलिए ब्लैक रेडिएशंस को हम फुल रेडिएशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारा जो रेडिएशन का कंजप्शन जो हो रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो फुल हो रहा है, टोटल हो रहा है, इसलिए फुल रेडिएशंस को आप ब्लैक रेडिएशंस भी बोल सकते हो, टोटल रेडिएशंस भी बोल सकते हो। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा कि सर ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि सर हम इसको कि ब्लैक बॉडी के थ्रू जो हमें रेडिएशंस एमिट हो रही है उसको आप ब्लैक रेडिएशंस भी बोल सकते हो, फुल रेडिएशंस भी बोल सकते हो, टोटल रेडिएशंस भी बोल सकते हो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। Next question is the amount of heat flow through a body by conduction is option A, directly proportional to the surface area of the body. Option B, directly proportional to the temperature difference on the two faces of the body. Option C, depend upon the material of the body, and the right answer is all of the above. The right answer is all of the above because the question's amount of heat flow through a body by conduction मतलब कि कंडक्शन के द्वारा उस बॉडी के थ्रू जो हीट फ्लो जो हो रहा है उसको वो हमारे उस बॉडी का जो सरफेस जो एरिया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होगा। मीन्स कि मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ कंडक्शन या कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो आप दे रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपका सरफेस एरिया कितना है। 20 मीटर है, 40 मीटर है, 30 मीटर है, 200 मीटर है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो हीट कि आपको कितनी अमाउंट ऑफ हीट देनी है और कितनी अमाउंट ऑफ हीट मेरी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्लो होगी इन द केस ऑफ द कंडक्शन। हमारे डिफरेंस कि जो हमारी लीट आउटलेट टेम्परेचर के हम अगर हम बात करें के अंदर हीट हीट होता है तो हमको टेम्परेचर रिलेट और टेम्परेचर आउटलेट में ये बात पर भी हमारे डिपेंड है कि किस टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज कर। सो यहाँ पर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आंसर ये लाइक third is depend upon the material, and the right answer is all of the above. Since the MS power of a body depends upon its temperature, often pressure, physical nature, and option all of.
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि हमारी किसी भी बॉडी की जो एमिसिव पावर जो होती है वो हमारे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, वो हमारी उसके वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसकी फिजिकल लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। The next question is the amount of radiations mainly depend upon the option C, nature of the body, option B, temperature of the body, option C, types of surface of the body, and right answer is, and the option D is all of these. The right answer is option D, all of these. अगर हम किसी भी अगर हम बात करें कि मतलब किस कंडक्शन के बारे में बात करें, कन्वेक्शन के बारे में बात करें, अब हम यहाँ पर रेडिएशन के बारे में बात करें, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन इन अ सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जो हमको मिलेगा, एक आउटपुट जो हमको मिलेगा, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो वो हमारे उस बॉडी के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड विच टाइप्स ऑफ सरफेस आप यूज में ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हमारे तीनों आंसर सही है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, लाइक नेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, एंड द टाइप ऑफ surface of the body. The next question is film coefficient in defined as inside diameter of the tube. Option A, equivalent thickness of the film. Second is thermal conductivity, equivalent thickness of the film specific into viscosity. Option C, thermal conductivity, molecular diffusivity of momentum, thermal diffusivity, and the right answer and the last option is फिल्म कोफिशिएंट इनटू इनसाइड डायमीटर थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ से ये हमसे पूछा है कि अगर हम फिल्म कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो किसी भी इनसाइड डायमीटर के मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के इनसाइड डायमीटर के फिल्म कोफिशिएंट के बारे में हम बात करें तो उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी इक्वलेंट थिकनेस ऑफ फिल्म स्पेसिफिक हीट इनटू विस्कोसिटी। मतलब कि उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो और उसका फिल्म स्पेसिफिक हीट की इक्विवेलेंट थिकनेस का एक जो मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसके बेस पर हम किसी भी सिस्टम के इनसाइड डायमीटर के फिल्म कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, thermal conductivity equivalent thickness of film specific heat into viscosity. Ninth question is diffusivity is the option A, a function of temperature. Option B, physical property of a substance. Option C, dimensionless parameter. And option D is all of the above. The right answer is option B, physical property of a system. Last but not the least question is the most commonly used method for a design of a duct size is the option A, velocity reduction method, option B, equal friction method, option C, static Regan's method, and option D is dual or double method. The right answer is option C, static regions method. Thank you.
बच्चों को रेस्ट तो नहीं करवाना। तो क्या करूँ तो मम्मी